इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के इस हिंदी मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय पर, एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे और इस महान यज्ञ को बनाए रखने के लिए एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट मौन हो रह करके इस प्रार्थना करें। धन्यवाद साथियों। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के हिंदी सेशन में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर रोज एक अच्छे अनुभवी स्पीकर्स के साथ अपने समय को व्यतीत करने के लिए जो हम लोगों ने प्रण लिया है, आज हमारे बीच में, हमारे अपने ही बीच के बहुत ही अनुभवी और क्या कहेंगे कि ज्ञाता, विषय के ज्ञाता, जो बहुत ही डिटेल्स में, डेप्थ में, हर एक स्टेप बाय स्टेप्स जिनका की है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना, ऐसे आदतों से भरे हुए डॉक्टर कुलवंत सिंह का हम पुनः इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह हम लोगों के कोई नए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में काफी पहले भी आ चुके हैं। कई एक विषय पर उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन किया है, हम लोगों को प्रेरणा दिया है, वह पुराना रहा है। डॉक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कुलवंत सिंह सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं और यह एक डीन भी हैं यूनिवर्सिटी के वहाँ के, और इसके साथ में इनका जो बहुत बड़ा साथ रहा है, और खास करके मैं अपने साथ, इनके साथ में जो समय बिताया सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में, वह हम लोगों के लिए यादगार क्षण है, जहां मुझे इनके अंदर की गहराइयों को समझने का मौका भी मिला। साथ साथ मिलकर के हम लोगों ने शिक्षा समिति में बहुत सारे नियमों को बनाया, जो कि आज भी वह संदर्भित है, आज भी उसका उपयोग नेशनल काउंसिल कमीशन फॉर होम्योपैथी कर रहा है। इसके साथ हम लोगों ने एक जो सोच किया था कि निरंतर एजुकेशन का व्यवस्था किया जाए, वह वर्कशॉप करने का बुनियाद शायद सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में हम लोगों के ही द्वारा किया गया। डॉक्टर कुलवंत सिंह हर एक पग पग पर हम लोग के साथ रहे थे। तो इसके साथ में इन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए। मैं इनके जो टैलेंट्स हैं उससे मैं काफी प्रभावित हूँ, और केवल इतना ही नहीं, केवल लेक्चर में ही नहीं है, खाली क्या कहते हैं सैद्धांतिक नहीं, इनका व्यवहारिक रूप को आप देखना चाहते हैं तो जमशेदपुर चले जाइए, वहां पर इनके क्लिनिक के भीड़ को और क्लिनिक में पेशेंट के जो लाभ हो रहे हैं उसको देख करके आपको लगेगा कि जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का एक मीटिंग पॉइंट डॉक्टर कुलवंत सिंह है। और इसके साथ में उन्होंने विदेशों में भ्रमण किया है, इनके बहुत सारे लेख है और बहुत सारे आलेख है। मैं कितना गिनती कराऊं, बार बार हम लोग गिनती कराते हैं और ये अंत नहीं होता है, इसका अंत नहीं है। तो आइए हम लोग समय को बचाते हुए इनके इस अनुभव को, आज हम लोगों के सामने में एक देखने में तो बड़ा छोटा सा बात लगता है, साइनस हो गया है, तो लेकिन कहते हैं कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात होती है। छोटा सा साइनस हम लोगों को बहुत सारा कष्ट दिया करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं साइनस के लिए होम्योपैथी में किस तरह का जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, इसके विषय में इसका फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस होम्योपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग जानने का आज इनसे अवगत होने का मौका मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कुलवंत सिंह से कि अपना व्याख्यान शुरू करें। स्क्रीन शेयर करूं सर? होस्ट बना दिए? आवाज आ रही है सर? आप शुरू करें। आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ, आप शेयर करें। डॉक्टर साहनी को उनके मधुर वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, और जो जिस काबिल हूँ तो वो डॉक्टर साहनी ने ही बनाया है। डॉक्टर साहनी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं कहाँ था, कहीं था ही नहीं, लेकिन हर जगह हर स्थान पर डॉक्टर साहनी ने मुझे हमेशा मौका दिया।
और आज जो भी थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ डॉक्टर साहनी की वजह से ही जानते हैं। आपका धन्यवाद, IFPH को धन्यवाद, और सभी उपस्थित डॉक्टर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज अटेंड करने के लिए। आज हम लोग जैसा साहनी जी ने कहा कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो हम साइनोसाइटिस पर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। साइनस, जैसा हम जानते हैं, ये हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर डिफरेंट पैसेजेस होते हैं। एक हॉलो स्पेस होता है जिसमें हवा भरी हुई रहती है, और उन्हीं स्पेसेस को हम साइनस बोलते हैं। साइनस क्या है, हम लोग आएंगे, पहले साइनस की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। तो साइनस की जो जानकारी है वो 5वीं शताब्दी में भारत के ही बहुत बड़े सर्जन माने जाते थे, सुश्रुत। तो सुश्रुत जी ने 5वीं शताब्दी में ही साइनस की जानकारी ली और साइनस के रिपेयरिंग की जानकारी दी, जिसको बेस में बेसिकली नीतिगत रूप से वही चीज आज तक चल रही है। ये महान आश्चर्य की बात है कि उसके बेसिक फिलॉसफी में, ट्रीटमेंट ऑफ साइनस, डायग्नोसिस ऑफ साइनस में, जो 5वीं शताब्दी में सुश्रुत जी ने कहा था, आज भी वही कायम है। तरीका बदल गया, एडवांस्ड फॉर्म्स आ गए, लेकिन चीजें वही। 16वीं सेंचुरी में साइनस का एग्जैक्ट एनाटॉमिकल जो डिस्क्रिप्शन था वो डॉक्टर एगैरियस और डॉक्टर सिजेरियस ने वर्णन किया था। और हिपोक्रेट्स ने भी 5वीं शताब्दी में एग्जैक्ट साइनस को तो वर्णित नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कि कुछ ऐसे सर दर्द होते हैं, हेडेक होते हैं, जो गलत लिक्विड के डिस्चार्ज हो जाने से आराम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये अल्टीमेटली साइनस का ही एक लक्षण है। और इसको साइनस कहाँ पर है, क्या क्या है, इसका एक एक्सीडेंट से इसको पता लगा था। एक डेंटल टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा था, तो उस समय डॉक्टर्स ने देखा टूथ एक्सट्रैक्शन के समय कि देयर आर सम ओपनिंग्स which open in the nose, in the mouth, and those openings were known as sinus. साइनस का अर्थ होता है एक ट्यूब, कनाल। और इजिप्शियन जो मेडिकल हिस्ट्री है 3700 से 1500 ईस्वी BC, उनको मैग्जेलिन साइनस की सिर्फ मैग्जेलिन साइनस की जानकारी थी, ये इतिहास में बताया गया है। हिपोक्रेट्स ने ये भी कहा है कि while producing sound the air passes through hollow spaces in the skull। हिपोक्रेट्स ने उस समय जान लिया था कि जो हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो एयर कुछ हॉलो पैसेजेस होते हैं साइनस स्कल में, उससे पास होती है तभी आवाज निकलती है। एक बहुत महान पेंटर हुए हैं जिनका नाम है लियोनार्डो डी विंसी। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग जानते ही होंगे। महान पेंटर लियोनार्डो डा विंसी, ये महान पेंटर ही नहीं थे। देखिए, उनकी एक विश्व की सबसे विख्यात पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। ये तो लोग जानते होंगे कि मोनालिसा जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग विश्व की सबसे विख्यात पेंटिंग है, और ये लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई थी। तो लियोनार्डो डी विंसी की खासियत यहाँ ये बताना चाह रहा हूं मैं कि लियोनार्डो डी विंसी एक एनाटॉमी के बहुत बड़े जानकार भी थे। और उस जमाने में उन्होंने, ये देखिए स्कल की एक पिक्चर बनाई है 2 साइड करके, तो इस साइड में देखिए उन्होंने उस जमाने में साइनसेस को दिखाया है। इतना अभूतपूर्व चित्रण लियोनार्डो डी विंसी ने किया, इसकी कोई तुलना हो नहीं सकती है। और जानकारी की क्या सीमा थी उनकी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। लियोनार्डो दा विंसी की एक अभी पेंटिंग 2017 में नीलाम हुई है, ऑक्शन होता है ना, तो ऑक्शन में वो 3,500 करोड़ रुपए में बिकी। आप लियोनार्डो डी विंसी की महानता का परिचय इसी से जान लीजिए। एक उनकी बहुत पुरानी पेंटिंग, जो सौदवी एक संस्था है जो नीलामी करती है, ऑक्शन करती है, उसमें 3,500 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग बिकी है। और दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा विंसी ने बनाई,
और उन्हीं विंसी ने ये देखिए स्कल का चित्रण किया हुआ है। तो मतलब उस जमाने में भी वो इतने अच्छे चित्रकार थे कि साइनस का एग्जैक्ट चित्र उन्होंने बनाया। साइनस के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी बातें जान लें जो हर बार किताबों में सब जगह नहीं मिलेगी। आप ये समझिए, एक दिन में हमारे नोज से 20,000 लीटर एयर पास करती है। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और सारी जो नेजल एयर पैसेजेस हैं, साइनसेस हैं, सबसे होकर के ये पास करती है अबाउट 20,000 लीटर, विच वी डोंट नो। Human have 400 olfactory receptors in comparison to 40 sensors for taste. ये कमाल की बात है। आप जाने समझें कि हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल को सूंघने की, गंध को सूंघने की ताकत 400 रिसेप्टर्स हैं, जबकि फूड को टेस्ट करने के सिर्फ 40 रिसेप्टर। तो लॉ स्मेल हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते, अगर हमारी नेजल कैविटी ठीक काम कर रही है तो स्मेल को हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते। उसके मुकाबले में टंग में 40 तरह के ही टेस्ट कॉम्बिनेशन होते और बहुत ज्यादा सीमा तक हम जो टेस्ट करते हैं उस पर भी स्मेल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नोज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाउ वी परसीव ए टेस्ट। इसी टेस्ट को हम कैसे परसीव करते, समझते, जानते, उसमें ऑल्फैक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नाक और साइनस की ग्रोथ 19 साल तक सिर्फ होती है। 19 साल के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती, खाली लंबाई बढ़ती। नाक की लंबाई बढ़ सकती है लेकिन अंदर के साइनसेस की ग्रोथ 19 साल के बाद और नहीं होती। नोज से 1 लीटर म्यूकस डेली बनता है। इट प्रोड्यूसेस 1 लीटर ऑफ म्यूकस डेली विच इज swallowed। वो हम लोग निकल जाते, पता नहीं चलता। खाने में, पीने में, बार बार थूक निकलने में वो हम निगलते रहते हैं और निगलते इस प्रक्रिया में 1 लीटर म्यूकस डेली बनता है। 80% जो हम सेंस ऑफ टेस्ट एक्चुअली देखते हैं वो हमारे सेंस ऑफ स्मेल से ज्यादा होता है, ना कि टंग से। टंग में जाने के पहले वो सेंस ऑफ स्मेल उसको परसीव करती है, तो टेस्ट को परसीव करने का काम नोज सबसे पहले करता है, टंग बाद में करता है। इसलिए कहा गया है बहुत से लिटरेचर में कि अगर आप सही तरीके से एरोमा थेरेपी करें जो सिर्फ स्मेल पर काम करती है, तो एरोमा थेरेपी इज ए वेरी सक्सेसफुल टूल इन केस ऑफ साइनसाइटिस। देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, ह्यूमन नोज जो सही है, जिसमें स्पेशल परसिस्टेंस है, वो 1 पार्ट आउट ऑफ 7 बिलियन सेंट को समझ सकती है। कोई बिलीव नहीं कर सकते। नोज कैन डिटेक्ट 1 ट्रिलियन स्टिमुलाई। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं हम लोग को भी नहीं पता। सेंस ऑफ स्मेल इज इवन स्ट्रॉन्गर देन द सेंस ऑफ साइट। तो सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन, नोज, छोटी सी नाक, लेकिन उसमें कितनी सारी खासियत है, कितनी सारी खूबियां हैं, ये आप देखने की कोशिश करें। 4 पेयर ऑफ साइनसेस होते हैं हमारे शरीर में, स्कल में। चारों साइनसेस का उसके लोकेशन के आधार पर नामकरण किया गया है। यह फ्रंटल साइनस है, ठीक फ्रंट पर, नाक के ठीक ऊपर, यहाँ पर दिस इज द फ्रंटल साइनस। उसके ठीक नीचे ये जो गालों के ऊपर है, दिस इज मैक्सिलरी, मैक्सिला पोर्शन में है मैक्सिलरी साइनस। इसके ठीक नीचे देयर इज एथमॉइड साइनस। ये एथमॉइड साइनस है ग्रीन कलर में, और येलो कलर में जो देख रहे हैं दैट इज स्फीनॉइड साइनस, जो एथमॉइड साइनस के नीचे होता है। 4 पेयर होते हैं, ऑल आर इन पेयर, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड और उसके नीचे स्फीनॉइड। लेकिन होता क्या है कि साइनस, नोज, ये आपस में बिल्कुल अटैच्ड। साइनस से एक कॉमन पैसेज निकलता है जिसको ऑस्टियल मीएटस बोलते हैं। तो ऑस्टियल मीएटस में साइनस का डिस्चार्ज आकर के नोज से बाहर निकलता है। तो दे बहुत आपस में लगे हुए हैं। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में, ज्यादातर केस में आपको जो मिलेगा, नेजल एलर्जी भी मिलेगी और साइनस की प्रॉब्लम भी मिलेगी। इसलिए आजकल
ज्यादातर इसको हम लोग डायग्नोसिस जो लिखते हैं दैट इज राइनोसाइनोसाइट, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ राइनो, नोज, राइनो मीन्स नोज। तो ये इन्फ्लामेशन और साइनसेस के इन्फ्लामेशन को मिला करके आजकल जो टर्म चलता है दैट इज राइनो साइनोसाइट। 4 तरह के साइनस मैंने बताए आपको। हम देखने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे। बीमारी का इलाज तो हम करते हैं, समझे तो सही कहाँ पर क्या है। लेट अस सी। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। जी सर। सर आप, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपको होस्ट बना दिया गया, आप कृपया हमें होस्ट बना दीजिए। कहाँ से बनाऊं सर? सर आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, उसमें आपको मेरा नाम को बगल में जो 300 बिंदु है उसको क्लिक कीजिएगा, तो उस पर मेक होस्ट कर दीजिएगा, तो मैं फिर आपको को होस्ट कर दूंगा। उनका तुम भी निकल गया, देखो ना। ऐसा आ नहीं रहा सर। सर आप तो होस्ट आपका हैं नाम सर। मिला? जी सर। अब इसमें क्या करूं सर, आपको होस्ट कर दूं? हाँ, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जी सर। हाँ ठीक है सर, अब मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ सर। आप चालू रखिए सर, अब कीजिए। हाँ क्या मैं आप को कहता हूं? होस्ट हैं सर, अब चालू रखिए सर। जी सर ठीक। ये साइनस को हम देखने की कोशिश करें। स्कल बोन है, ये देखिए फ्रंटल साइनस है रेड कलर। ये मैक्सिलरी साइनस हुआ, ये ग्रीन में फ्रंटल साइनस हुआ। ये देखिए ब्लू कलर में एथमॉइड साइनस जो मैंने बताया, और इसके ठीक नीचे होता है स्फीनॉइड साइनस। ये इस बीच को बहुत ध्यान से देखिएगा कि एथमॉइड साइनस यहाँ पर स्कल और ब्रेन से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। ये देख रहे हैं इसकी लेयर्स, ये बिल्कुल ब्रेन से सटी हुई रहती है। इसका इंपॉर्टेंस बाद में हम लोग जानेंगे। They are the most complicated group of sinuses and occupy that critical space between the eyes and just below the brain. ये सारी जो साइनसेस हैं, आंख से, ब्रेन से, नोज से, सबसे ये जुड़ा हुआ रहता है एथमॉइड साइनस। तो दैट इज व्हाई एथमॉइड साइनस को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट साइनस बोलते हैं। Sinus is named after the specific skull bone that contains it. The maxillary sinuses are within the paired honeycomb of small air cells. They are the most complicated group of sinuses and occupy that critical space between the eyes and just below the brain. When viewed in the sagittal plane, you can see how the ethmoid sinus. ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है अभी। ये एथमॉइड साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस, ये फ्रंटल साइनस, ये एथमॉइड साइनस। ये 4 तरह के साइनसेस हैं। ये बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब हम लोग जानेंगे कि दर्द कहाँ से कहाँ जाता है, किस साइनस में, उसमें ये बहुत लाभकारी होगा। Sinuses occupy the upper parts of the nasal cavity from the front to the back. The sphenoid is seen in yellow and is behind the nasal passage. The sinus is named after the चार्ट से भी समझ ले तो समझ में आ गया होगा सबको। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज ब्लैक चेक में फ्रंटल साइनसेस हैं। एंटीरियर एथमॉइड ये ग्रीन कलर में है, पोस्टीरियर एथमॉइड ये पर्पल कलर में है, मैक्सिलरी रेड में है, स्फीनॉइड येलो में है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द साइनसेस। साइनसेस में एयर जो होती है वो हमारे स्कल को हल्का रखती है, नहीं तो स्कल बहुत भारी हो जाएगा। वो 2 बोनी लेयर के बीच में हवा भरी हुई रहती है, उससे हमारी आवाज भी गूंजती है और हमें लाभ मिलता है कि हमारी स्कल का वजन कम रहता है। ये सारे फायदे एनाटॉमिकली साइनस के हैं। इस साइड से देख लें तो फ्रंटल साइनस पेयर में है, फ्रंटल बोन पर है, पोस्टीरियर वॉल इज एडजेसेंट टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा। मैक्सिलरी साइनसेस जो हैं, दिस इज मैक्सिलरी साइनस, सब पेयर में है, सुपीरियर वॉल फ्लोर ऑफ ऑर्बिट,
ये सब आंख, नाक, ब्रेन, कान सब एक दूसरे के साथ बहुत डीपली नजदीकी से यहाँ पर रहता है, जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है अगर हम इसकी सिम्टोमेटोलॉजी पर जानना चाहें। ये एथमॉइड साइनस है जो सबसे इंपॉर्टेंट साइनस है, इसी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और स्पेनॉइड पीछे स्पेनॉइड बोन के साथ सटा हुआ है। ये अगर एक्सरे में देखें तो बस वही बात है, ये सामने में फ्रंटल, उसके पीछे एथमॉइड, ये स्पेनॉइड, ये मैक्सिलरी साइनस, ये स्कल में दिखाया गया है डिफरेंट पार्ट ऑफ साइनस। साइनस का मेन फंक्शन होता है कि जो भी म्यूकस बनता है, वी आर हैविंग सम म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द साइनस कैविटी, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। मैंने बताया दिन भर में 1 लीटर हम लोग म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो उस म्यूकस को निकालता कौन है बाहर, कहाँ जाता है? या तो थ्रोट से हम उसको निगल लेते या नाक से बाहर निकालते। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जरा माइन्यूट स्ट्रक्चर सीलिया। सीलिया के बारे में सब लोग जानते हैं। ये सीलिया जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इसकी लाइनिंग, साइनस में लाइनिंग होती है यहाँ तक। ये सीलिया बहुत स्पीड मूव करते, और वो बहुत स्पीड मूव करने के चलते अंदर का सिक्रेशन बाहर आ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात, अगर सीलिया मूव नहीं करेगा तो अंदर का सिक्रेशन बाहर नहीं आएगा, अंदर का सिक्रेशन बाहर नहीं आएगा तो वहीं जम जाएगा, और वहीं जम जाएगा, दैट इज साइनोसाइटिस। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें सीलिया का, जो अंदर के सिक्रेशन को, म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देखें। Effect on the membranes, and dust and dirt are prevented from accumulating. Unlike the simulation, healthy nasal mucus यहाँ fluid म्यूकस का all सिक्रेशन होता है, surfaces, and it flows in an extremely ये देखिए thin, म्यूकस का clear layer सिक्रेशन हो रहा है। towards the throat for swallowing. The mucus membranes have hair-like cilia on These the are the surface, cilia. which provides the pumping action that makes active mucus flow possible. बहुत स्पीड मूवमेंट होती है ये। Particles stick into viscous mucus and are moved along by the coordinated action of the cells that line the sun. मैंने जैसे भी बताया था कि वेट रिड्यूस करता है, इंसुलेशन फॉर द स्कल होता है, और हमारी आवाज जो गूंजती है उस हवा के चलते गूंजती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब साइनस का इंफेक्शन हो, साइनस पूरा भारी हो जाए, ये भारी हो जाए, तो हमारी आवाज कैसे हो जाती है? नाक से, हम नाक से बोलने की, ऐसा लगता है नेजल वॉइस, एज इफ ए पर्सन इज स्पीकिंग फ्रॉम नोज, इस तरह की आवाज हो जाती है अगर साइनस का इंफेक्शन बढ़ जाए। तो वॉइस कम्स फ्रॉम द, ये मैंने बताया कि ऑल साइनसेस दे ओपन इनटू ए, दिस इज सब कॉमन एरिया है साइनसेस का, ये सारे एरिया कॉमनली यहाँ पर ओपन होते हैं, विच इज नोज। ये नोज में ये सारा आकर के ओपन करता है। अगर ये ब्लॉक होने लगे, ये सारा एरिया ब्लॉक होने लगे, देन द कंडीशन इज नोन एज साइनोसाइटिस। कैसे होता है ये? तो मैंने अभी बताया कि इट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। म्यूकस ब्लैंकेट इज इन 2 layers, superficial viscous layer, underlying serous layer. Cilia beat in the serous layer, moving the blanket towards the natural ostia. This is the opening, nasal opening. Normal function depends on patent ostia, ciliary function and quality of mucus. देखिए ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है साइनस के इंफेक्शन में जानने के लिए। सबसे पहली बात कि ऑस्टियल जो कैविटी है वो सही होनी चाहिए, उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। सेकंड, सीलिया प्रॉपरली काम करना चाहिए। और म्यूकस की क्वालिटी, अगर म्यूकस अंदर बहुत गाढ़ा बन रहा है, बहुत थिक म्यूकस बन रहा है, तो वो थिक म्यूकस सीलिया के द्वारा बाहर आना बहुत मुश्किल है, एंड विच इज इन टर्न कॉजेस साइनोसाइटिस। 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण, पेटेंट सीलिया, पेटेंट ऑस्टिया एंड म्यूकस। अगर ये तीनों में से कुछ भी सही तरह से काम नहीं करेगा तो पेशेंट को साइनोसाइटिस होना जरूरी है। ये मैं अभी बताया आपको। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, म्यूकस का सिलिया से क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। ये म्यूकस का स्पीड देखिए सिलिया का, 700 to 800 टाइम्स इन 1 मिनट। ये 1 मिनट में 700 से 800 बार मूव करता है, इसकी स्पीड समझिए। और 9 मिलीमीटर वो
म्यूकस को बाहर करता है, निकालता है। उसकी स्पीड है 1 मिनट में 9 मिलीमीटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एथमोइडल साइनस। अगर ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे होगा ये, कब कब हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ऑस्टिया, में बार बार बता रहा हूँ, अंदर की जो कैविटी है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कभी कभी डीएनएस हो गया, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, कभी कोई नेजल पॉलिप हो गया, कभी इन्फेक्शन से कुछ और ब्लॉकेज आ गया, इन सारे कारणों से ऑस्टिया का शेप खराब हो जाता है, ऑस्टिया ठीक से काम नहीं करता है, एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू हाइपोऑक्सीजनेशन। कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी तो सिलिया का फंक्शन कम हो जाएगा। हाइपोऑक्सीजनेशन लीड्स टू सिलियरी डिसफंक्शन एंड पुअर म्यूकस क्वालिटी, एंड सिलियरी डिसफंक्शन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन। तो जहां सिक्रीशन रुक जाएगा नेजल कैविटी में, साइनोसाइटिस हो जाएगा। इट कैन स्टॉप इन द ब्लॉकेज इन द ऑल साइनसेस, maxillary, frontal, ethmoid and below this sphenoid. But mostly 3 साइनस ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, that is maxillary, frontal and ethmoid। और एक्सरे में भी ये तीनों ज्यादा नजर आते हैं। अगर स्फेनॉइड की जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए सीटी स्कैन करने से जल्दी पता चलता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो नंबर 1, इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, लोकल ब्लॉकेज है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज इन्फेक्शन एंड स्टॉपेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, नेजल सेप्टम डेविएशन, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, नेजल पॉलिप, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, सिलेरी डिस्काइनेशिया। सिलेरी डिस्काइनेशिया मीन्स सीलिया प्रॉपरली मूव नहीं करता है, डिस्काइनेटिक हो गया है, एलर्जी उसकी कम हो गई है, एनर्जी। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन, जब लंग्स में कोई इंफेक्शन हो और वो इंफेक्शन ट्रेवल कर जाए, इन दैट केस इट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज नॉट वेरी कॉमन, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा इसके डायग्नोसिस के 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, वन इज मेजर क्राइटेरिया, वन इज माइनर क्राइटेरिया। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस, एक्यूट 1 से 4 हफ्ते, सब एक्यूट 4 से 12 हफ्ते, क्रॉनिक 12 हफ्ते से लंबा। तो ये मेजर क्राइटेरिया में ये 5 चीजें हैं। फेशियल पेन, जब यहाँ पर जमा होने लगेगा तो फेस में भारीपन और दर्द होगा, तो देयर इज फेशियल पेन, फेशियल कंजेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज दैट इज पोस्ट नेजल ड्रिप। पेशेंट बोलेगा हमको नीचे से पीछे से कहीं से नाक में कुछ गिर रहा है। हाइपोस्मिया और एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। पेशेंट बोलेगा आकर के आपको कि हमको कोई गंध नहीं सुनता, समझ में नहीं आता है कोई भी गंध। माइनर क्राइटेरिया में है हेडेक, फीवर, हैलिटोसिस, हैलिटोसिस इज ऑफेंसिव स्मेल, फटीग, ईयरफुलनेस एंड कफ, डेंटल पेन। डेंटल पेन भी हो सकता है, किस साइनस में होगा हम लोग बताएंगे। तो अगर 2 मेजर और 1 माइनर सिम्टम किसी पेशेंट में है, कोई भी 2 मेजर कोई भी 1 माइनर अगर पेशेंट में है, तो दैट पेशेंट विल बी टर्म्ड एज ए पेशेंट ऑफ साइनस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके? तो एक्सरे पीएनएस करते हैं। अगर पीएनएस एक्सरे किया जाए तो एक्सरे करने पर खासतौर पर फ्रंटल, मैक्सिलरी, ये 2 तो बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं। उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उससे भी नहीं हो तो एमआरआई। एमआरआई नॉर्मली इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। और नेजल एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, उसमें एंडोस्कोप डाल करके नाक के अंदर डाल के पूरा चेक करते हैं तो साइनसेस कहाँ पर है, कहीं इन्फेक्शन है कि नहीं, कहीं सूजन है कि नहीं, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। लेकिन मेन जो जांच है एक्सरे पीएनएस सबसे कॉमन, सबसे सस्ती, सबसे सुलभ। और इसमें समझ में नहीं आए तब सीटी स्कैन। ये देखिए, ये एक एक्सरे आप देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर फ्रंटल साइनसेस में यहाँ पर कंजेशन है। ये देखिए फ्रंटल साइनस में यहाँ से यहाँ तक साइनस है, तो ये पोर्शन पूरा कंजेस्टेड है, ये पोर्शन पूरा कंजेस्टेड है। यहाँ पर आकर देखिए
मैक्सिलरी साइनस में ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन कंजेस्टेड है, यहाँ पर क्लियर है। एक सीटी स्कैन है, इसमें देखिए एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। ये है लेफ्ट फ्रंटल साइनस जो बिल्कुल क्लियर है, ये है राइट फ्रंटल साइनस जो कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ओपेसिफाइड राइट मैक्सिलरी साइनस। ये मैक्सिलरी साइनस बिल्कुल क्लियर है, ये मैक्सिलरी साइनस कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो इस तरह की पिक्चर आपको एक्सरे और सीटी स्कैन में मिलेगी। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसका डायग्नोसिस भी बहुत आसान। नाउ वी विल, हम लोग जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे जानने की किस किस प्रकार के साइनस में दर्द कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है। ये बहुत जरूरी है ताकि आप पहचान सकें पेशेंट के लक्षण से ही कि उसको कहाँ पर साइनस हो सकता है। देखिए, अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस है तो पेन कहाँ कहाँ जा सकता है, टेम्पोरल, ऑक्सीपुट, वर्टेक्स, पैराइटल। अगर फ्रंटल साइनस है, फ्रंटल साइनोसाइटिस में, तो पेन में ट्रेवल टू टेम्पोरल रीजन, पैराइटल रीजन, वर्टेक्स एंड ऑक्सी। ये 4 रीजन है जहां पर दर्द जा सकता है। अगर और कहीं दर्द हो रहा है तो वो शायद फ्रंटल साइनोसाइटिस का केस नहीं हो। दर्द और भी जा सकता है ना, यहाँ भी आएगा, अपर सर्वाइकल में आ सकता है, शोल्डर में आ सकता है, बट इन केस ऑफ फ्रंटल साइनोसाइटिस द पेन इज ट्रेवलिंग टू दीज 4 एरियाज, टेम्पोरल, ऑक्सीपिट, वर्टेक्स, पैराइटल। अगर मैक्सिलरी साइनस है तो देखिए, मैक्सिलरी साइनस अगर होगा तो ये सिर्फ 3 जगह पे जाता है, टेम्पल, मैंडिबल, टीथ। मैंने बताया था आपको कि दांतों में दर्द होने लगता है। पेशेंट को साइनोसाइटिस की तकलीफ है लेकिन पेशेंट बताएगा कि मुझे दांत में दर्द। तो मैक्सिलरी साइनस के सीवियर के, ये मैक्सिलरी साइनस है, तो यहां से देखिए पेन ट्रेवल कर सकती है दांतों में, टेम्पल्स में, और ये मैंडिबल्स। मैंडिबल, ये मैंडिबल हो गया, ये टूथ हो गया, टेम्पोरल रीजन। दिस इज व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैक्सिलरी साइनसाइटिस। नाउ कम टू एथमॉइड। एथमॉइड में देखिए पेन गर्दन तक ट्रेवल कर सकता है। हम लोग नहीं मानते जनरली कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है तो उसको गर्दन में दर्द होगा, लेकिन एथमॉइड साइनस नीचे रहता है, वहां से रिफ्लेक्स पेन आपको अपर सर्वाइकल रीजन में भी आ सकती है, वर्टेक्स में जा सकती है, पैराइटल रीजन में जा सकती है। तो एथमॉइड साइनस की पेन 3 जगह से जाएगी, चौथी जगह नहीं जाती। दैट इज अपर सर्वाइकल रीजन, टेम्पोरल रीजन एंड वर्टेक्स। नेक्स्ट इज फोर्थ। इसमें सबसे ज्यादा पेन ट्रेवल करती है क्योंकि सबसे डीप रूटेड स्फेनॉइड साइनस होता है। एथमॉइड से भी अंदर स्फेनॉइड साइनस होता है, तो इट मे ट्रेवल टू शोल्डर, ऑक्सीपिट, मैस्टॉइड, वर्टेक्स, टी, टेम्पल। सबसे ज्यादा जो रेडिएशन है पेन का वो स्फेनॉइड साइनोसाइटिस में ही आपको। आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया कि कहाँ पर दर्द होता है, कहाँ से दर्द ट्रेवल करता है, किस साइनोसाइटिस में कहाँ दर्द जाता है। ट्रीटमेंट पार्ट में आएंगे हम लोग। तो जो मैथमेटिक कंसिडरेशन इसमें है, दैट इज बेसिकली सोरा। ये जो साइनोसाइटिस जो होती है ये सोरिक नेचर में है, टेंडेंसी टू डेवलप साइनस इश्यूज, ए प्रीडिस्पोजिशन टू वीक इम्यून रिस्पॉन्सेस मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू साइनस इन्फेक्शन। साइकोटिक पेशेंट कब होगा, सॉरी, साइकोटिक पेशेंट कब होगा, जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, लाइक नेजल पॉलिप। अगर पॉलिपस की ग्रोथ है, नेजल पॉलिप है, कोई सी और ग्रोथ के चलते नेजल सेप्टम जो होती है वो डेविएट कर जाती है किसी भी साइड में, तो दैट कंडीशन विल बी ए साइकोटिक कंडीशन। एंड सिफिलिटिक कंडीशन में, बहुत सीरियस कंडीशन में, जब वहां पर बोन का नेक्रोसिस होने लगता है, तो इन दैट केस दिस केस बी ऑफ सिफिलिटिक नेचर। साइनस को समझने के लिए ये 5 शब्द बहुत काफी हैं। S is for sense of smell is reduced, I is for inflammation, N is for nasal congestion and obstruction, U is for unclearing of space by cilia, and S is for sense of congestion in the head. ये साइनस को अगर डिफाइन करें तो इन 5 वर्ड्स में, 5 लेटर्स में इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द मेडिसिन। समय कम है इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं। Calibychrome is one of the best medicine. It works in all kinds of sinusitis. इसको हमेशा याद रखें आप कि there are very few medicines, बहुत कम दवाएं ऐसी हैं
जो हर तरह के साइनोसाइटिस में, चारों तरह की साइनोसाइटिस में काम करती हैं, कैलीबाई उनमें से एक है। और पहचान इसकी क्या है? देयर इज टफ स्ट्रिंजी म्यूकस। पेशेंट बोलेगा नाक से म्यूकस निकलता नहीं है, निकलता है तो रस्सी धागे के समान एकदम टफ, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके चलते सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरल्जिया होता है, आंख के ऊपर, उसको दोनों आंख के ऊपर दर्द होने लगता है। जनरली फैटी और फ्लैशी पर्सन होते हैं। और कैलीबाई की विशेष पहचान, पेन इन स्मॉल स्पॉट्स। तो पेशेंट बोलेगा आपको कि हमको यहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब बस यहीं पर दर्द होता है, दैट इज ए कैलीबाई पेशेंट। सबसे बड़ी पहचान, हर तरह के साइनस पर काम करती है कैलीबाई क्रोम। टफ और स्टिंजी म्यूकस रहता है, ये इसकी बड़ी पहचान है। टफ स्टिंजी म्यूकस जो है वो स्टिक्टा में भी है, कॉर्पस्टेक्टाई में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है जो हम लोग बाद में आएंगे। तो ये एक कैलीबाइक्रोम दवा हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन इज पल्सेटिला। तो वेरी गुड मेडिसिन, वेरी गुड मेडिसिन। कोल्ड हुआ, कोल्ड होने के बाद में थोड़ी खांसी हुई और यहाँ पर कफ, पेशेंट आकर के बोलने लगा मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर पर हैवीनेस लगता है। तो फ्रंटल एंड सुप्रा ऑर्बिटल हेडेक, फ्रंटल सुप्रा ऑर्बिटल हेडेक, राइट साइड इज मोस्ट इफेक्टेड। येलो ग्रीन डिस्चार्ज, ये बहुत बड़ी पहचान है पल्सेटिला की। पल्सेटिला में जो भी डिस्चार्ज होगा या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, और नॉट अनलाइक स्ट्रिंजी, कैलीबाइक्रोम जैसा स्ट्रिंजी नहीं होगा, बहुत आराम से निकलता है बाहर। पेशेंट एक बार खांसता है, कोशिश करता है, निकलता है। और पल्स का पेशेंट जो है वो चेंजेबल नेचर है, प्यास नहीं लगती है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, इमोशनल है, टिमिड है, फियरफुल है, ये सारी पहचान होती है पल्सेटिला। इस जगह पर राइट साइड में फ्रंटल एंड सुप्रा ऑर्बिटल पेन, ये फ्रंटल सुप्रा ऑर्बिटल पेन, राइट टेम्पोरल पेन, टेम्पल रीजन में भी पेन होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, ये राइट साइड में दोनों जगह पेन होगा, विथ easy discharge from the nose, greenish yellowish discharge from the nose. Next is sanguinaria. सैंग्विनेरिया देखिए बहुत बार होता है, ये है कि हम दर्द को, साइनस के दर्द को बहुत बार माइग्रेन से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो माइग्रेन में भी दर्द होता है, माइग्रेन में भी इसी तरह भारीपन होता है, माइग्रेन में भी उल्टी लग सकती है, माइग्रेन में सर में सेंस ऑफ हैवीनेस इन द स्कल। तो राइट साइडेड हेडेक्स के लिए स्पेसिफिक है आपको सैंग्विनेरिया। और सैंग्विनेरिया में भी राइट साइड हेडेक होता है, ऑक्सीपुट से लेकर के दर्द सामने आने लगता है। पेन comes from the occiput, comes and settles over the eye on the right side. This is peculiar, periodical, limited times में आता है। Pain in the back also. It can be associated with nasal polyp, yellow discharges, mostly right side, aggravated by touch. Sanguinaria सबसे अच्छी दवा है अगर peculiarly राइट साइड पेन है, पेशेंट को राइट साइड में बड़ा हैवीनेस है, दर्द पीछे से चालू होता है, सामने आकर के सेटल करता है। अगर यही पीछे से चालू होगा और लेफ्ट साइड में सेटल कर जाएगा, देन द मेडिसिन विल बी स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया में न्यूरल्जिक पेन्स है, सैंग्विनेरिया में न्यूरल्जिक पेन्स नहीं है। सैंग्विनेरिया में पेन विथ हैवीनेस, सर में भारीपन, बहुत दर्द और आईब्रोज के ऊपर। दिस इज sanguinaria. Next is Caliod, one of the best medicines for what we say syphilitic जब स्टेज आने लगे, जब बोन में डिजेनरेशन हो जाए, बहुत क्रॉनिक केस हो जाए, तो दिस इज ए मेडिसिन व्हिच इज देयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस। पेन ऑन साइड्स ऑफ इट, दोनों दोनों साइड में पेन होता है। और ये देखिए एक्रिड हॉट वाटरी डिस्चार्ज, ये एक्रिड डिस्चार्ज साइनस के केस में बहुत कम दवाओं में है। दिस इज वन ऑफ देम, एक्रिड डिस्चार्ज। फेशियल न्यूरल्जिया, सिफिलिटिक डायथेसिस, मैंने अभी बताया कि इसमें बोन्स में डिजेनरेशन होने लगता है, नेजल पॉलिपस हो जाते हैं, नेजल पॉलिप्स में भी कभी कभी ब्लीड करने लगता है। इन ऑल दिस केसेस व्हेन द केसेस आर वेरी क्रॉनिक, देन द मेडिसिन इज कैलीआयोड। नेक्स्ट वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर कॉचली एरिया, इसको मैंने प्रैक्टिस में यूज किया है।
बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैं हूँ इस मेडिसिन को यूज करने के बाद। पर्टिकुलरली अगर फ्रंटल पेन है, कैन सी फ्रंटल साइनोसाइटिस, प्रेसिंग बोरिंग पेन, बर्निंग एक्रिड डिस्चार्ज, ये एक्रिड डिस्चार्ज कैलियर में भी है, hoarseness, rawness, soreness, impaired hearing, even the ears are affected। साइनस का जो पेशेंट होता है ना, एक्यूट पेशेंट, वो ये सब चीज बताता है आपको। सर एकदम माथे में दर्द है, पढ़ नहीं सकते हैं, कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं, भारीपन लगता है। और साइनस के केसेस में दर्द से ज्यादा सेंस ऑफ हैवीनेस इज इम्पोर्टेंट। पेशेंट बोलेगा कि हमको ये पूरा सर भारी है, ये ब्लॉक लगता है, सर झुकाने से हम सर जहां झुकाते हैं यहाँ पर बहुत भारीपन लगता है। ये सेंस ऑफ हैवीनेस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन पेन। सेंस ऑफ हैवीनेस, नेजल ब्लॉकेज, आंख के ऊपर का भारीपन होना, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाना, ये सारी चीजें साइनोसाइटिस का पहचान। कोचलेरिया, प्लीज इसको याद रखिए, कोचलेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर साइनोसाइटिस। नेक्स्ट, अगेन a gem for the treatment of sinusitis, Viola odorata। वायला ओडोराटा में एक सबसे बड़ी पहचान है, पेशेंट हमेशा आपके पास बैठा भी होगा, 2-3 दवाओं में है, वायला ओडोराटा में भी है, कि पेशेंट हमेशा आकर के बस ऐसे ऐसे करते रहेगा, प्रेसिंग अबव द आईब्रोज, आपके सामने बैठा तो भी ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि उसको उससे बड़ा आराम मिलता है। तो मोस्टली दिस इज ए मेडिसिन फॉर फ्रंटल साइनोसाइटिस। पेन अबव आईब्रोज, मस्ट निट द आईब्रोज, देखिए आंख आईब्रोज को निट करता रहता है, ऐसा दबाता रहता है, ओकेशनली वर्टिगो एंड बर्निंग ऑफ। ये आप फर्स्ट क्लास मेडिसिन मान सकते हैं। अगर पेशेंट आकर के बोले तो बस हमको यहीं दर्द, हमको यहाँ दबाते रहने से बहुत अच्छा लगता है, दैट इज वायला ओडोराटा पेशेंट। नेक्स्ट इज स्पाइजेलिया, तो अभी हम थोड़ा बता भी चुके, देयर इज पेन ऑन द लेफ्ट साइड, पेन कम्स फ्रॉम द ऑक्सीफुट, सेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज ए स्पाइजेलिया पेशेंट। और मैंने बताया था सैंग्विनेरिया भी राइट साइड है, स्पाइजेलिया लेफ्ट साइड। सैंग्विनेरिया में डल हैवी पेन है, स्पाइजेलिया में न्यूरैल्जिक पेन है, जैसे फेशियल न्यूरैल्जिया, बिल्कुल लहर के समान रहता है, पेन इन एंड अराउंड आई, और इसमें भी पेन पीछे से आकर के लेफ्ट आई में सेटल करता है, फ्रंटल से आके लेफ्ट आई के ऊपर सेटल करता है। सैंग्विनेरिया में राइट आई के ऊपर सेटल करता है, स्पाइजेलिया में लेफ्ट साइड में सेटल करता है, एज इफ ए बैंड अराउंड है, लगता है उसको सर में कोई बांध दिया है। दिस काइंड ऑफ अगर पेन मिलता है आपको, देन योर मेडिसिन इज स्पाइजेलिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग दवा है, लूफा अपरकुलाटा, बहुत कम यूज करते हैं लेकिन बड़ी अच्छी दवा है ये मैंने प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूं मैं, लूफा अपरकुलाटा, वेरी नाइस मेडिसिन। और इस चीज को आप पहचानते हैं, पुराने लोग पहचानेंगे। आपको याद होगा पहले हर राशन दुकान में, पान दुकान में सूखा हुआ एक इसी तरह का इसको सुखा करके लोग सेल करते थे बदन में रगड़ के नहाने के लिए, पुराने लोगों को याद होगा। तो दैट इज द प्लांट, इसको सुखा करके स्नान करने में, रगड़ने में लोग यूज करते हैं। यही जब सूख जाता है इसको लोग बिक्री करते हैं, दैट इज लूफा उपरकुलाटा। फ्रंटल हेडेक, स्पेशल एक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, एलर्जिक राइनाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, नेजल कंजेस्शन। तो ये आप जो भी सिम्टम देख रहे हैं, ये सारे सिम्टम आपको साइनोसाइटिस का एग्जैक्ट पिक्चर दिखा रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की प्रॉब्लम से ही सीलिया में डिस्फंक्शन होता है, और सीलिया में डिस्फंक्शन होने से ही आपको तकलीफ होने लगती है साइनोसाइटिस की। और फ्रंट साइड में हेडेक होगा, मतलब फ्रंटल साइनोसाइटिस में ज्यादा काम करेगा। उसके साथ नेजल डिकंजेशन है। साइनसिस के केस में मैक्सिमम केस में आपको ब्लॉकेज ऑफ नोज मिलता है। तो ब्लॉकेज ऑफ नोज क्लियर करने के लिए लूफा अपरकुलाटा, और एक और दवा जो बहुत अच्छी है, सब जानते हैं, लेमना माइनर। लेमना माइनर और लूफा अपरकुलाटा, दीज आर द टू मेडिसिन विच आर वेरी ऑफन एंड वेरी सक्सेसफुली यूज्ड। जब कब यूज करते हैं हम इसको, जब हम ये देखते हैं कि नेजल कंजेशन है,
एलर्जिक राइनाइटिस है, पेशेंट को बहुत छींक आ रही है, नाक से पानी भी जाता है, उसके साथ नाक ब्लॉक भी रहता है, ऑल दीज कंबाइंडली आर पेशेंट ऑफ लूपा ओबरकुलाटा। ये देखिए, ये दवा है लेमना माइनर। लेमना माइनर जो है, ये लोग सॉरी टैंक्स में, तालाब में, नदी में आजकल लोग इसको उगाने लग गए हैं। ये देखिए लेमना माइनर पूरा यहाँ पर टैंक में छाया हुआ है, ये उसके फ्रूट्स हैं। ये बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीटॉक्सिक, जल से टॉक्सिक मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना, उसको हटा देना, टॉक्सिसिटी को कम कर देना, ये इसकी नेचुरल खासियत है। ये जो नेचुरल खासियत है, ये जब होम्योपैथिकली हम यूज करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने देखा, नेजल पॉलिप अगर है तो नेजल पॉलिप में अगर उसके साथ टर्बिनेट्स में स्वेलन, देखिए नाक के अंदर देर आर टर्बिनेट्स, 3 टर्बिनेट्स, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। जब आप नाक के अंदर देखिएगा तो इंफीरियर टर्बिनेट बहुत इजी से फूला हुआ लगता है, 90% लोग उसको पॉलिप समझ लेते हैं, जो नाक में फूल गया देखो जी पॉलिप हो गया, बट दैट इज नॉट पॉलिप, दैट इज इन्फ्लेम्ड नेजल टर्बिनेट। जो आप दवा दीजिए वो श्रिंक कर जाता है। तो दैट टर्बिनेट स्वेलिंग इज वेरी ग्रेट की नोट फॉर लेमना माइनर। नेजल पॉलिपी, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, पीछे से नाक में कुछ कुछ ड्रॉप होगा ऐसा लगता है पेशेंट को, राइनाइटिस, तो स्टॉपेज ऑफ नोज। स्टिक्टापी मैंने कुछ बताया था, थोड़ा सा समय मेरा समाप्त हो रहा है। तो स्टिक्टापी इज ए मेडिसिन जब पेशेंट इस तरह से बैठा रहता है। एथमॉइड साइनस, पेन फोरहेड, रूट ऑफ नोज, कॉन्स्टेंटली ब्लोज नोज, नो डिस्चार्ज, स्ट्रिंजी। देखिए यहाँ पर लेकर के कैलीबाई भी बैठा रहता है, स्टिक्टा भी बैठा रहता है, लेकिन स्टिक्टा में देर इज नो डिस्चार्ज, कैलीबाई में देर इज स्ट्रिंजी डिस्चार्ज। कैलीबाई में स्ट्रिंजी डिस्चार्ज होगा और स्टिक्टा में डिस्चार्ज नहीं होता, होता है तो स्ट्रिंजी होता है, लेकिन ज्यादातर तौर पर ड्राई होता है। रेडिएशन पेन, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, माफी चाहता हूं इसके लिए। अगर पेन देखिए फ्रंट से ऑक्सीपुट जाता है, फ्रंटल साइनस से ऑक्सीपुट में ट्रेवल करेगा, देन द मेडिसिन ब्राइनिया, ओरियोडेफ्ने एंड जेल्सिन। पेन travels from the front side, settles in the occiput. Brownia, Oreodaphne, Jessimium. अगर पेन ऑक्सीपुट से सामने आकर के सेटल करता है ऑन द राइट साइड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीपुट settling over the right eye, Jessimium, sanguinaria, silicea. Sanguinaria is the most important. अगर पेन फ्रंट और ऑक्सीपुट से आकर के लेफ्ट आई के ऊपर देखिए सेटल कर रहा है, देन द बेस्ट मेडिसिन इज स्पाइजेलिया, कैलीबाई एंड स्टिक्टार ऑल्सो। दिस इज जस्ट ए गाइडलाइन टू डायग्नोज द मेडिसिन। आप मेडिसिन कैसे पहचानेंगे, साइनस के पेशेंट्स तो आते रहेंगे, आगे से पीछे जाए तो ब्राइनिया जेल्सिमियम, पीछे से आगे आए राइट साइड सैंग्विनेरिया, लेफ्ट साइड स्पाइजेलिया एंड स्टिक्टार। Now, as per the exact sinus problems, very interesting part, अगर फ्रंटल साइनस में इंफेक्शन है तो फ्रंटल साइनस में द मेडिसिन आर बेलाडोना, हाइड्रेस्टिस, कैलीबाई, वायोला। ये सब टिप है, एकदम टिप से आपको याद रखना है। इफ देयर इज पेन इन द फ्रंटल साइनसेस, कुछ नहीं समझ में आता है, ये 4 दवाओं में चूज कीजिए जो मोस्ट सुटेबल है। पेन इन द फ्रंटल साइनसेस, बेलाडोना, हाइड्रेस्टिस, कैलीबाई, वायोला ऑर्डरा। वायोला ऑर्डरा मैंने बताया ना, पेशेंट एकदम इसको नीट करते रहता है। अगर पेन मैक्सिलरी साइनस में है तो दीज आर द मैक्सिलरी साइनसेस, कैलीबाई, पल्सेटिला, हिपरसल्फ, वायोला, कोचलिएरिया एंड स्टिक्टा। ये सभी मेडिसिन हम लोगों ने अभी डिस्कस की। हिपरसल्फ खाली दवा है विच इज वेरी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड। बहुत ठंड लगती है पेशेंट को, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, किसी भी तरह के एक्सपोजर में उसको तकलीफ होने लगती है। उस कंडीशन में फर्स्ट स्टेज में हिपरसल्फ काम करता है। नेजल डिस्चार्ज, सेंसिटिव टू कोल्ड। उसके बाद की स्टेज में पल्सेटिला और बाकी दवाएं।
और सबसे अंतिम में कैली आया। इफ द पेन इज इन एथमॉइड साइनस, वो सबसे खतरनाक साइनस है, कैलिबाइकोम, स्टिक्टा, बायोलॉजिका, फैंगेनी। These are the 4 medicines which are mostly useful if there is pain in the sinus. मुझे लगता है कि मुझे यहाँ समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मोडालिटीज में हम जाएंगे। तो मोडालिटीज सब हम लोग जानते ही हैं, मोडालिटीज, एमिलोरेशन, ओपन एयर, ये सब में दवाएं भी हैं, लेकिन इसमें मैं जाना नहीं चाहता, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिस फिनिशेस माय स्मॉल लेक्चर ऑन साइनोसाइटिस। मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ा, लेकिन किसी के कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है कुलवंत जी, हमेशा की तरह आप इतना अच्छा एक साथ में हम लोगों को एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं, मेट्रेमेडिका। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है सबके लिए, हिस्टोरिकल सेशन हो जाता है। शेषाधरण साहब का सवाल के पहले एक बात करना चाहते हैं। एक क्वेश्चंस को मैं, सर आप अपना पीपीटी को हटा देते तो अच्छा रहेगा। जी सर। एक सीएसएफ साइनस रायोनेरिया के विषय में 2 सवाल आए हैं, जी सर। तो उस पे आपका क्या अति है? किस चीज के लिए सर? सीएसएफ साइनस रायोनेरिया, सीएसएफ रायोनेरिया स्पॉन्टेनियस। सीएसएफ राइनोरिया बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम है, अनकॉमन है जी, बहुत अनकॉमन है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को नोज से निकलना ये जल्दी संभव नहीं होता है। एक्चुअली राइनोरिया इज ए कंडीशन जिसमें सीवियर नेजल डिस्चार्ज हो रहा है। उसमें अगर कभी कभी रेयर केस में मैंने बताया था कि एथमॉइड जो साइनस है, एथमॉइड साइनस इज वेरी क्लोज टू द ब्रेन। एथमॉइड साइनस जो होता है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है और वो ब्रेन से सटा हुआ रहता है। तो अगर किसी कंडीशन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो नहीं आता है नॉर्मल, अगर वो वहां से आने लगे, दैट कंडीशन मे बी नोन एज cerebrospinal rhinorrhea and the best medicine will be Calian. थैंक यू सर। सर अपना पीपीटी हटा लीजिए। पीपीटी तो हटा लिया मैंने सर। नहीं हटाया सर। डॉक्टर शेषाधरण, डॉक्टर कुरूप सर प्लीज आप बोलिए। सत श्री अकाल जी, डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, इट वाज वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया था, आपका बहुत धन्यवाद। तो आप इंग्लिश का सेक्शन में भी आ जाइए, एक बहुत बढ़िया सेक्शन था। एक बिग सैल्यूट, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स। सर आपका पीपीटी नहीं हटाया सर, हम लोग को दूसरे सेशन में भी जाना है। सर मैं तो देखिए सर, अब हट गया। अब ठीक है, अब आ गया सर, अब आ गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग का के लिए एक कहते हैं कि हम लोग के इतने दिनों की यात्रा में हम लोगों को जो हमेशा अच्छा मिलता रहता है, वह आपका सेशन सभी को पसंद आता है और इसके लेक्चर्स भी सब कोई बार बार सुना करते हैं, हम लोग देखते हैं। डॉक्टर हरिहरन, यू वांट टू से समथिंग? Okay, doctor. Doctor, yeah, your class is very informative. Thank you. Like last other classes, you showed wonders. See, now also you astonished us by telling this all this pathological, physiological, and medicine and all. See, doctor, one doubt in our class. One doctor asked CSF rhinorrhea. I cured one of such a case. Yes, sir. The medicine is arnica. Arnica? Arnica. Oh, surprising. Very surprising. I cured a case. Very good selection, please. Okay, doctor. Very nice class. Very informative. Sir, please come to our English session also. Sure. Because, see, all others will be happy if you come to the English session. Thank you so much. Okay. Your other classes, PCOD and menstrual cycle, everything, sickle core, these are all very wonderful classes.
Thank you, sir. Thank you. Sir. Okay. One thing Thank is you, sir. important, sir. One thing is important that he starts from the history. His presentation starts from the history and then he comes to the modern technology also. And wonderful explanations of the Mitra Medica is also there. So you see the organon, Mitra Medica, everything in one. So all in one. I say we study the everything in one lecture of Dr. Kulwant Singh. So I think Dr. Dhanesh, you are the host for the next session. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So we shall be completing this session. Dr. Nutan Sharma ji, आप लेट ज्वाइन किए हैं, आप थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। जी सर, बहुत माफी चाहती हूँ और मैं सर को सुन नहीं पाई। कुलवंत सिंह सर, आपका हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपको सुनने में बड़ा मजा आता है। बहुत ही डिटेल में, बहुत यूनिक चीजें, रेयर चीजें आप सब कुछ क्लब करके बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं देखती रहती हूँ आपके सेशन, बहुत ही अच्छे। आज मैं थोड़ा लेट आई लेकिन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सानी सर का स्पेशल धन्यवाद कि कुलवंत सिंह सर जैसे एमिनेंट होम्योपैथ को हमारे सामने लेके आए। सर मैं कल बहुत खुश हो गई कि आपका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी, लेकिन मैं आज कहीं फंस गई और मैं पहुंच नहीं पाई टाइम से। तो फिर आप आइए सर, और जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ तो मुझे बहुत गर्व होगा और हम सुनेंगे सर दोबारा आपको। निश्चित रूप से डॉक्टर नूतन जी अगले सेशन में सर का अगला सेशन लेंगे और उसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जी सर, वही मैं चाहती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ऑन किया हुआ था, मेरे कुलीग बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुलवंत सिंह सर है, ये तो मेरे टीचर रहे हैं। बहुत 2-3 लोगों ने कहा, तो मैं इतना, मुझे बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो सर मैं सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, IFPH का भी। धनेश सर जुड़ चुके हैं इंग्लिश सेशन के लिए, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और एक बार फिर सभी का धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे, नमस्कार। Thank you, Dr. Sharma, Sahani sir, and Kulwant Singh sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1177th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is from Pakistan, Dr. NAVEED AWAN. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. As you all know, we are regularly conducting 3 sessions, 7 to 8 Hindi session, 8 to 9 international session, and 9 to 10 local language session now in Malayalam. So today we have a wonderful guest from Pakistan, Dr. NAVEED AWAN. He has completed MD DHMS in homeopathy and then completed MS in psychology, and is a very fine personality who is an expert in clinical is working as a clinical psychologist as well as a member of psychological association in Pakistan, and he is an international mentor, expertise in using mind technique, presented many cured cases of diabetes, kidney failures, depression disorders, and so many presentations he has made in this forum, and is a wonderful personality with depth, a very high depth in rubric knowledge. He is a person who follows Saiger School of Medicine, homeopathy, and that's also is a wonderful thing as far as we are concerned. Always presenting some of the beautiful cases here in this forum. He has made all presentations with all narrations. What are the causes of the particular disease and how he convert the symptoms into rubric. These are the things that really we have to look into, and he is a person always giving a rubric a day with explaining its beauty and how you have to differentiate one rubric from the other one. This is he is doing on a daily basis in international forums also. So today he will be presenting a case of rectal hyposensation with single dose of homeopathy. As you know, why this is important, because always uses very single dose, that is in the minute form,
and bringing wonderful and excellent result. That is what is Dr. NAVEED AWAN is. And so we are proudly welcoming sir to this forum. Welcome, sir. Good evening, Dr. Dinesh and all the respective members. Thank you very much for your warm welcome. Thanks a lot. So today I'm going to present a case of rectal hyposensation. I request Dr. Dinesh, please allow the participant here. I am feeling the disturbance while admitting them. Thank you. Sorry, sir, that we will manage. You Okay, not admit. You just concentrate on your presentation, sir. Okay, thank you. And please allow me to share the screen. Okay, right. Okay. Really, you are the co-host, sir. Okay. You can make it. Yes, thank you. So that is the case of rectal hyposensation. So the primary function of rectum is to collect and hold your poop until it's time to release it. Right. There is some disturbance while managing to admit the participant. No, Okay. no, I shall admit everyone. You Okay, just okay. concentrate on the presentation, sir. Okay, sorry. Since So thank you. So primary function of rectum is to collect and hold your poop until it's time to release it. Your rectum relaxes and stretches to accommodate the waste as it gradually comes in from your colon. Rectal hyposensation, a loss of ability to sense the stool in the rectum or the need to have a bowel movement. Impaired or blunted rectal sensations, termed rectal hyposensitivity, that is called the RH, which is defined clinically as the elevatory sensory threshold to rectal balloon distension, is associated with the disorders of hindgut function, characterized primarily by the symptoms of constipation and fecal incontinence. However, its role in the symptom generation and the pathogenetic mechanism underlying the sensory dysfunction remain incompletely understood. Although there is evidence that RH may be due to primary disruptions of the afferent pathway, secondary to abnormal rectal biomechanics, or to the both. Nevertheless, correction of RH by various interventions, behavioral, neuromodulation, surgical, is associated with and may be responsible for symptomatic improvement. This review provides a contemporary overview of RH, focusing on the diagnostic, clinical associations, pathophysiology, and the treatment paradigms. RH is found most common in the patient with a spinal cord injury or clinical documented neuropathy. However, it is also seen in the patient without overt neurological compromise. In patients without overt, RH is found in up to the 23% of patients with the constipation. It is most common in the patient with the function, that is the dysnergic defecation rather than the structure, that is the reticuli and the insusception causes of their defecatory difficulties. So 10% of the patient with incontinence also have the RH. It may lead to constipation via development of fecal retention due to lack of urge, its association with the functional RED, influencing colonic motility through inhibitory feedback mechanism triggered as a result of rectal stasis. RH may lead to incontinence via its association with the functional constipations, where fecal leakage is secondary to fecal impaction or impaired evacuation, that is fecal overflow. So impairment of reflexive or conscious contraction of the anal sphincter and association with the pelvic floor weakness.
Rectal hyposensation treatment. There is currently no definitive treatment targeted to RH in the functional bowel disorders. However, bowel retaining therapy incorporating sensory biofeedback has been shown to result in a reduction in rectal sensory threshold to balloon distension. This is associated with a subjective improvement in the symptoms. There is some evidence that neuromodulation techniques such as with SNS or extracorporeal magnetic electrical stimulation may be an effective treatment for the patient with functional bowel disorder associated with the RH. Surgery can be considered in highly selected patients where RH is secondary to increase the rectal dimensions. So that was the short introduction of rectal hyposensation. Now I move to my case, which is treated with the homeopathy. So it was the case of 12 years child. Observation: the child entered clinic with his father. As his father shook hand, but child didn't take and sat aside and keeps playing with the fingers while sitting and stamping his feet on the floor. So when I asked him, what is your name? What's your problem? Or tell me about yourself, child responds only by repeating the questions and seems he is unwilling to reply. He keeps biting the nails and sucking the fingers. The child father told that his child had problem since for the last 4 months. He doesn't feel that he needs washroom. I came to know of his problem after 10 days, that he had problem. On inquiring, he told that he had the problem quite a long time. I took him to the hospital. His tests were conducted, but nothing specific was diagnosed. So concerned doctor advised for the using laxatives. Now I administer laxatives to him after 2 or 3 days. Then he used the washroom in order to ease his nature. If he's not asked about the washroom for a week, he doesn't care. He does not feel any need of using the washroom. As I myself, working in a reputable government hospital and consulted each doctor, and I also know everything but cannot find the exact cause. Child became the victim of the problem after the month of fasting. He kept fast in daytime, and after the break, he would eat chips, so he faced the problem. That is the thinking of his father. He say, it's my thinking. I asked his father, do you feel any change in his routine after the problem? He told me that nothing changed in his routine. He followed the same routine of attending the school, complete the homework, then start playing. Seems busy in breaking, repairing the things. He's not much careful about his problem, but we are having the concern about it. His father said he is intelligent, gets good position in the class, and above all, he is a good fellow by nature. He is obedient. He feels shy of talking or mingling with the strangers and feels of shy being familiar with them. Once he get mingle with them, then he shuns the shyness and blushness. His father further told me that he took all the treatments, allopathic, herbal, and homeopathic, but no relief from any side. I was depressed
as the problem of child persists. Someone told me about you, so I came in the hope that my child get rid of this problem. This was the case. The case was solved by taking the observatory rubrics and the physical symptoms. Now, which rubric was most prominent to me? That was the physical symptoms. Rectum, constipation, general urging to stool with, absent, no desire with. That rubric was taken from the Murphy repertory. Here are the 9 medicine: alumina, bryonia, graphite, hydrostress, indolum, opium, sanicola, sulfur, and verity. These were the 9 medicines. That was very peculiar to me, as the urging of stool was absent to the child. Helping rubrics are there, answering aversion to answer, carefree, gesture, make, feet, involuntary motion of stamping the feet, and gesture, make, finger, mouth, children put the finger into. So these were the rubrics, and one more rubric was indifference recovery too. Sorry, indifference suffering too. You can see here, when I applied the rubrics, the medicine was veretum and opium. So these 2 medicines are moving side by side. First, I have given opium, but there was no result. I have reanalyzed the case. What was the common? Why was the case is not solved? I request the patient to revisit me. Second time, when the child came again with his father, the same behavior was that. Child entered in the cabin with no regards, paying no regards, paying no respect, as his father was paying the respect. The child said and answered the question in very irrelevant way. So that behavior was prominent to me. And one rubric, which is very important, that was the reverence for those around him lack of. Mean these patients do not pay the respect to their surroundings. So when I applied this rubric, the medicine was veretum album. 3 doses were given interval of 10 minutes. So second day follow-up by his father, child felt a severe pain in the stomach. Child start the cramp, feeling the cramps in the stomach. Third day, first stool passed with a difficulty, but next 2 times, same day smoothly. Till now, child is okay, no constipation problems. So this case was the solve with the physical symptoms and then the observatory rubrics. So what was the observatory rubrics? That reference lack of gesture making, stamping the feet, gesture making, putting the fingers in the mouth, biting the nails. So these all rubric help me to reach at the right simulum, that was the veretum album. Now here was another question which I put in front of you. As his father said that he feel the shyness in front of the strangers, but when they become familiar with them, there is no shyness. So that rubric is in our repertory, that is the timidity in the presence of stranger. There are 2 medicine, Bratacar and the dysphoria. But the rest of the rubrics were not covering that medicines. So I have ignored that rubrics.
and I have focused only on the observatory rubric, that was the reverence leg, and one of the most important rubric was urging to stool absent. Now I want to share the follow-up of the patient. You see here, that was the case. Audible to you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Now audible. Okay, that was the first video of the patient. You can see here. Video is not yet uploaded, sir. Okay. Okay, I again share the. Now you can see. So we can see. Okay. You can see here that stamping the feet and involuntary motion of the legs, and he's playing with the fingers, and later on you can see that he will put the fingers in the mouth, biting the nails. Yes, everything fine. Okay. That is the follow-up the patient. Child father is saying that now there is no complaint. First, there was no urging for the stool, and only we have the check. We give the check on the child that either he is passing the stool or not, but still there is no sensation of stool in the child. They use the laxatives, but now after the medicine, stool is normal. Child father is saying that all the symptoms regulate. Okay, so that was the follow-up of the child. Living till now, very normal life, no any symptoms. Now some view of Veritam album. So Veritam album is a remedy of acute miasm. Veritam album has the feeling that he has lost his social position, which he must regain quickly by any means or he will be finished. He tries to find the means for the sudden gains, gambling, lying, fraudulent business, etc. So show of wealth and importance are the prominent features seen in the Veritam. And using these, he tries to make up his lost social position. Social position is a very important factor in human life, for it ensures the security, marital prospectus, and the protection from the attacks. A threat to social position, therefore, is a threat to all these factors. On the other hand, Veritam persons are a joy to be with
talking, singing, jesting, cheerful. They can have also pleasant fantasy, for example, being in communication with the God. So Veretum is a rare constitutional type, one of handful of the remedies which correspond to the people who live their lives on the verge of insanity. Veretum patients who seek help for the physical complaints may appear only a little stiff and loud until one investigates the mental picture. The social etiquettes that we take for granted is often poorly mastered by Veretum, who is liable to laugh a little too loud or to launch into a description of his symptoms immediately upon sitting down without waiting for the homeopath to address him. So it is the constitution. What is the constitution type of the Veretum album? An elemental analysis of the constitution types, the 4 elements, earth, air, fire, and water, have for thousands of years been used by the mankind to represent the different qualities that make up the constitutions and that constitute the material world. They correspond to 4 humors known to the physician in the Middle Age, that is the phlegmatic, sanguine, choleric, and melancholic. These are the 4 constitutions. So Carl Jung, who was a famous psychologist, made his analysis sound more scientifically by using the function terms to describe the 4 types. Thus, the earth type is described as a sensation-oriented type, air type as the intellectual, the fire type as the intuitive or inspirational types, and the water type as the emotional types. These are the 4 elements which Carl Jung presented. 4 elements: earth, air, fire, and water. Now we see Veretum of which represent the which element or belongs to which elements. Veretum is often inspired in the manic fashion with a severe complex. He feels chosen to save the world, usually in a religious sense, and may stand in the street and preach to the wind. He is extremely willful. Fire and earth, it is the combination of the 2 elements, fire and earth. And very prone to the anger. He is also often very selfish. Veretum can be surprisingly practical for one close to the insanity. A reflection of strong earth element. This combination of earth and fire is also seen in the Arsenicum album, a very close related type. Both are obsessive, especially about the material things, and both are emotionally insensitive, having water as the inferior element. Here are some main rubrics of the Veretum albums. So, first rubric is blindness pretending. Veretum feels delusion blind he is. Delusion blind and deaf he is. So what is the meaning of blindness? When he says delusion blind he is, it means he cannot see the things around him. What is going around him? Why? Because he is despair of the social position. So he cannot see the things around him. Brooding alternating with screaming. Brooding is a deep thinking. When you think about something in a very calm, in a very peaceful way. When you think about something or some matter about. So here it is the alternate state. At one side, they are thinking deeply, and on the other side, they are screaming too. That is a single Veretum album. Another rubric is bulimia alternating with refusal to eat insanity. Bulimia is an eating disorder in which patient has a strong desire to eat more and more. But the another state is that they refuse to eat. So these are the alternative state of the patient. Censorious, silent disposition to be fault-finding or. Censorious. These patients disapprove about others. They find the faults in the others. They are not
agreeable to the other people's. Then in a delirium state, comma delirium with, comma eyes closed with, and comma eyes closed with one eye closed. That is the single veretum album. So if you see the patient in a coma state and the both eyes are closed, or one eye closed and one open, then there is a single medicine, that is the veretum album. Cursing headache during. It is the mental state of the patient that during the headache, they curse others, they abuse others. Cut, mutilate, or slit desire to things. Veretum album thinks that he is a Christ. He is a communicating with God. He is a messenger from the God. He is in a heaven and talking with the God. And then delusion power, all powerful she is. She is very powerful. Delusion prince he is. Delusion rank, he is a personal. Delusion distinguished. Delusion proud. Delusion wealth. These are all the superiority complex of the veretum album. He feels he is superior among the others, as he is a direct relationship with the others. We see here delusion distinguished he is. It means he is prominent among the other persons, present on the world, present on the earth. He is most prominent, as no one is there who is talking to the God, who is living in the heaven. But he is distinguished from all that personalities, all that persons living on the earth. Veretum album dress indecently. He embraces everyone. A strange family from his strangers, but not with the entourage and his family being kind with. So why he is a strange family from? His problems start when ailments from quarreling with his father. Actually, his conflict is with his father. He thinks that he is neglected by his father. So here his problem starts. Ailments from quarreling with father, ailments from neglected by his father. So therefore, veretum album is estranged from his family members. Estranged means he thinks his family members are like a stranger for him, but not with the entourage and family. But he is very kind with the other persons surrounding. Eyes downcast. Eyes downcast mean if your eyes are downcast, you are looking towards the ground, usually because you are feeling sad and embarrassed. So when the veretum album, who is thinking at a very high level, his mentality due to superiority complex is very high. Why he is compelled to think, or why he is compelled to behave like this, that his eyes are downcast? That is the despair social position about. And due to that, veretum albums goes into this state. Veretum album is very hard for inferior and kind for superior. What is meant by this rubric? It means that superior, the persons who are more in powerful, who are high in power than the veretum, veretum is very kind. But the person who are inferior to him, who are junior to him, on which are which are low in power to him, its behavior is very hard. So prejudice, traditionally prejudice. Prejudice means when you make an opinion about something in a negative way, like you have seen, mostly you have seen, or hearing the people's talking about around you, that we will not go to that country. Why you will not go to that country? As that country is full of the bad peoples. That country peoples are not good. So that make the opinions abound in his mind. It is the prejudice mental state. Preaching religious psychotic preaching.
religious affection too occupies by religion mania, and then boosted rich wishes to be considered as. Boosted rich wishes to consider as. Arsenic album, Veritable albums, these are the materialistic. These are the concerned about their social positions. Arsenic album can be differentiated from the Veritable album on this basis that there is a fear of no cut of nose is common in the Arsenic album. Therefore, he hide himself on the fear on the count of. While in case of the Veritable album, it is the booster. They talk in a very pride way just to impress others, because they are most concerned about their social position, so they want to impress the others, and in a way, in an opinion that others think him that he is a very rich person. We were talking about the rubric estranged family from the strangers. Actually, behind this rubric is dissociation from the environment. Dissociation from the environment. This rubric contains only 3 or 4 medicines. So what is meant by dissociation from the environment? When a person is moved out of the environment. So what is the environment? Where we are living. And the people around us is called the environment. That could be our family, that could be our office colleagues, that could be our neighbors, that are all our environment. So Veritable album dissociate from the environment. He moves out from the environment as he thinks that these people mortified him, these people insulted him, these people abused him. So due to this reason, he moves out of his environment. So that was the Veritable album, a very short introduction of the Veritable album. Now, if you have any questions, you can put about the case or of the Veritable album. Yes, please. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall we go for discussion? Yes. Another excellent presentation of a case of veratrum, and that too with a difference. Usually, people believe that veratrum is a medicine for diarrhea or dysentery or even cholera-like diseases, but it is entirely different. It can work in whatever methods, whatever disease, whether the constitution or the elements of the symptoms are correct. That is what is the presentation all about. That is, anyway, we are really very happy to have such a person who is always giving why this medicine is given and why those rubric are selected, and why when after giving this opium, why it fails, and then why he has to change the medicine. All these things were beautifully narrated. This is what is Dr. NAVEED AWAN is all about. So let us go for discussion. Our Dr. Ahmad Hassan from Saudi Arabia is waiting for a discussion to begin. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much, Dr. Shah. Very informative about the mind and really useful. Due to prayer time, I miss Maghrib time. I miss here something. I hear starting and just end also.
but inshallah, it is very good and informative. Jazakallah khairan. Welcome. Thank you, sir. Thank you. Dr. Veera Pratap, please unmute and speak, sir. Please unmute, sir. You can unmute yourself. Please unmute. Not able. Maybe due to some network problem. Dr. Shah, yes. Yes, Doctor, do you want to speak? Dr. Veera Pratap? No. There is some problem with if Dr. Muhammad Ali, do you want to speak? Have a question or any? Assalamu alaikum and good evening, Dr. Naveed Saab and Honorable Forum of IFPH. Once again, a very beautiful moment and company of IFPH umbrella. And this, once again, we see the Segal method cases by by Dr. Naveed Awan Sahab. He is young and great efforts for solving such beautiful cases, which is really incurable. But through the artistic approach, we see the case are solved by the Segal method. I appreciate your team and congratulate to Dr. Naveed Awan to solve such a beautiful case by Segal method. Thank you. Walaikum Assalam, Dr. Ali. Thank you very much for your nice comments. Nice to hear you. Thank you. Dr. Shakud Sethi, do you want to have any chat with Dr. Naveed Awan? Anyway, it's really a wonderful session. We asked just like any other session. Begin with what is hyposensation, and then later about the case, and then choosing the rubric symptoms and converting the rubric. You know. It is the Dr. Dinesh, it is the beauty of homeopathy. Yes. Where the other systems fail, their homeopathy work like a magic. Yes, exactly. The father of is working in a very reputable government hospital, and he worked throughout there, and still he is working there, and still he got through all the doctors for the treatment, but there was nothing like improvement, no improvement there. So why he came to me? Because his neighbor, in the previous session, I presented his case of hemiplegia. He was his neighbor. So by the reference of that patient, he came to me. So when he came to me, I have told him that you will be okay. Just keep in me, follow up with me, and your child will be okay. So on first attempt, the medicine selected didn't work. So on the reanalysis, Veritam work in a very, magic way, very quickly. And the response was next, and then next day was in front of you. It is the magic of homeopathy. Where other systems fail, their homeopathy emerges like a shining star, like a shining exactly. magic.
Exactly, that is what is homeopathy. Usually people used to visit those doctors from the other side, and they may change one doctor to another, and at last somebody may advise them to go to homeopath, and then when they reaches our clinics, we find that lot of complications are there. The complications are in due to the medication, and that also need to be addressed. And how will you address those conditions, doctor? Sorry? How will you address those cases? Because those maltreated cases from allopathic side, sometimes a lot of medications may be given to the patient unnecessarily. Yes, exactly. And in those cases, directly the psychiatric school advises just to go with the present situation, or whether you have to give some other medicines to annihilate those medicines complications. Yes, exactly. There were a lot of complications are there. And still this patient is under my treatment, but only on placebo. Medicine was only I have given him in my clinic. Then no medicine. Still on the placebo, child is going. That's what we all have to do. And Dr. Shakul Sethi, do you want to speak? You can address. Now you're audible. Dr. Shakul Sethi, you can speak if you want. Your mic is unmuted now. No, I think. Yes. Sorry to say, sir, I am very late due to prayer. I am really sorry. I missed the lecture. Inshallah, next time I will try to my best. No problem. We will be uploading the same tomorrow itself in the YouTube, so you can get it from the very beginning. Nowadays, IFPH is uploading every video on a day-to-day basis, so all of you can watch the presentations of previous edition as well as today's edition in YouTube. You just give IFBH homeopathy. Just give search IFBH homeopathy. So you can get Naveed's today's presentation tomorrow itself. So don't worry about that. That's why I thought that you want to communicate with Dr. Naveed, as he is an excellent presenter with his depth of knowledge in rubric as well as mathematics is something different when compared to others. So we are here to show that world that we can cure the incurable with our single medicine, and that too with some single dose. Yes. Okay, yes. One more thing I want to add here. I have said that Veritable album has reverence lack of. So how we can judge this patient in our clinic? Yes. It's about 3 or 4 months before. One patient came to me that was of the having the kidney stone. So when I entered my clinic, he just sat down and said, without from my side, what's problem, what's your name? He started himself suddenly. Just he entered in the clinic, and door cabin was just open. And from the door cabin, he started, doctor, I am feeling very pain. And that person referred me to you. So give me medicine. I asked him to sit down, please, and tell me what's your real issue. How you got this problem? What he replied, doctor, I have heard about you that you are a very famous doctor and very efficient doctor. And what you are talking about? I have pain. Give me medicine. If you can give me medicine, it's okay. Otherwise, I'm going. You don't know anything. I think I came to a wrong doctor. Only that was the case. I said, please hold on. I give you medicine. So I have applied the first rubric, reverse lack of. And another rubric was, so the medicine was Veritable I have given him.
And next day again, the patient came. He pay the gratitude to me, thank to me, doctor, I am very fine, and my stone was released. So there are the two faces of Veritam album. One, at one side, reverence lack of, they do not give the respect. On the other side, the veneration. They give too much respect. So what is the difference between two? They give the too much respect to that person who are superior to him. Like you see here, many religious peoples, either they are the priest, or to some their mullahs, or anyone, peoples just kiss their hand like this. They are giving the veneration. It is the veneration. They are giving the too much respect to that person who are the superior in power, status, wealth than them. And they show the reverence lack of. To which person? To that person where they think that they are the junior to him. They are not their status, they are not of their level, they are not of their strength. There it shows the reverence lack of. So Veritam is in the both shade. At one side veneration, and the other side reverence lack of. So thank you. I hope you have enjoyed Yes, this session. definitely. That's the basic difference. When a patient comes to the clinic and rushes into the doctor, and maybe sometimes we may be mistaken because the patient may be because of this. We may thought otherwise that patient is coming and because of talking like this because of his pain, but may not be. It can be of different reasons because he may be a person always responding in all that way. In those conditions, the same is also that is just like you told that the lycopodium patient when come to the doctor may give some respect, but when the doctor seem to be not fully qualified or not to be fully enough fit enough, then he may think that I am the boss here. He is just a yes, that's lycopodium delirium imperius. Imperius means he just when he came to you sitting down, and one another person is sitting outside your clinic or outside your cabin. So he passed the orders to him. Hey, come on, fetch me water. When that person reply, why you ask to me? And if he behave rudely, then lycopodium settle down and then behave diplomatic. Oh, you mind it? Sorry. I just said to you because you are just like my son. You are just my like brother. Then tone suddenly change. Lycopodium is a diplomatic then. I still remember a case of infertility because azoospermia was the problem, and once a person came to rushes to my clinic, and he usually in Kerala people used to wear munda that we used to say a cloth full other than pants. So a person who you unfold the Mundi is always giving showing his respect to the other person, but a person is not unfolding this mundu means he is something rascal like behavior. So this person was not doing that. Instead, he came to me and talked to me that doctor, I want medicine for my cow. Then I told you, who told me? Then some of his neighbor told him that you are giving medicine to the cow also. So I then suddenly, because of his disrespect, I asked him, how many children you have? No, doctor. No, I don't have. Then I told him,
you may go to home and you may bring your wife with you tomorrow morning so that I can give you a child with from you, because we homeopathy can do such wonders. Yes. So what I saw was the very next morning, he came with his wife and he was standing there in a very high respected way to me. He's showing a very high respect to me. So that's that itself shows he was a lycopodium, because his rudeness in the clinic itself shows that he is a typical lycopodium. And I just give him lycopodium therapy and it works, and he got a girl child later. That's what the rudeness itself will give us the indication of the medicine. As you, because I was also heard about this. I have attended one presentation of Saigals in our Kerala some 30 years back. So that gave me the clue. This is how to observe a patient. In those days, I have no knowledge about all those observative skills. But this case really gave me an opportunity to understand the rudeness. Yes, yes. Lycopodium is a dictatorial, talking with the air command of. Yes. So when he talks, he talk in a very dictatorial way, impose his wish or will on the others, and want to impose wish or will on the others, and same, he also want that others comply with his wishes. So when he see the others are more superior, then he just don't change. So it is the lycopodium. Exactly. I think Dr. Muhammad Ali want to speak to you, sir. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. Very fine. I want to ask a question about that. Is there any role of observation in case taking, sir, like a second method, sir? Sir, about what? Sorry? Please. Of a remedy. Cycle method about remedy. Sorry, I can't got you. Please repeat the question once again. Sir, I want to ask that is observation is importance in a cycle method for approach correct yes. rubric. Yes. In cycle method, there are two types of the communication. One is verbal and second is the non-verbal. So non-verbal communications are the 93% of 93%. They form the 93%, while 7% of the verbal communication. So 93% observation are the most important in the cycle method or in the mind method. So observation, we take the first observation. Observation means non-verbal communication, how the patient is sitting, how he's behaving, how he's talking to you, or what type of the gestures he is showing or demonstrating, what type of the gestures are there. So these are observation is the most primary thing. But if the fear is there, when the fear is, if we see the placement of the rubrics or placement of the intensity, like fear, anxiety, concern, reaction, and then the gestures or the observation. So when the fear comes, then fear is the most prominent, and we remaining observation minus. We take first fear. So observation is very important. So like you see here, I mentioned here of the brighter carb child. So brighter carb child, what the child does, he just hide himself. Okay. So when you say, come on child, come to me, listen what I'm going to say. So if he react to you, then he will not talk to you. He will just see you in this like this way. He will cover his face and just seeing you in the inside the fingers. That is a brighter carb.
So what will the Slatia do? Slatia will not come to you because Slatia is very timid in the nature. Okay, sir. That also hide himself behind the mother. Sorry, please. That also hide himself behind the mother. So what if you call, come on, son, come on, child, come to me. What's problem with you? So what will the Slatia do? He will very slowly creeps in a way and come to you. Okay, sir. Now I invite Dr. Savi to say a vote of thanks to the session as the time is about already past 9 p.m. here. Thank you. So, Dr. Savi, yes. Good evening to all of members and Dr. Naveed. I want to thank you very much for your case, and Dr. Danesh, thank you. I remember that I have an opium case, and I want to share this. He is a man. It was 26 or 27 years old, and he came to me only evocation for stool everywhere, every time. He didn't feel anything, and I want to help this man because very mild, very big problems for him, and I remember that I will give opium, and after that all these problems were good, because the main problem is the mothers in pregnancy or 6 or 7 months, she was a big shock. She had lived with shock, and after the babies come, and later 26 years he has these problems. But in this he was 6 old years, the problem is very, very great, because that time the mothers and fathers divorced, and opium is a difficult. Opium is a solution for this very difficult case. And like from album in your case, and I remember that I want to share this case. Thank you so much again. Thank you, Rosan. Thank you. Thank you all. And with that, we come to the end of the day 1177. Tomorrow we will have a session from Dr. Hirat N. Mehta, and he will be talking about another homeopathic subject, and that is homeopathy insight on neurological disorders. And this is all about today's presentation. Thank you, Dr. Aman, and those who joined from different parts of the world in this international session. Thank you all. Thank you all. You're welcome, sir. Thanks a lot to all Ifph and Dr. Danesh and all respected members. Thanks a lot. Thank you, sir. Namaskaram. IFBHന്റെ 1177ാമത് ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡിയാർ. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. നാം കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ മഹത് യജ്ഞം ഇതുവരെ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഗസ്റ്റുകളെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഡോക്ടർമാരെന്നുള്ള രീതിയിലും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും ആർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു സെഷനാണ്. ഹോമിയോപ്പതി എന്നല്ല, ആരോഗ്യ മേഖലയെ കുറിച്ച് ഉള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ അനുദിനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു മുത്താണ് നമ്മുടെ വേണുഗോപാൽ സാർ. വേണുഗോപാൽ എസ് റെഡ്ഡിയാർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും സാറ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അതീവ തീഷ്ണതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. തീർച്ചയായും IFBHന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് സാറിന്റെ ഈ വേദിയിലുള്ള ഓരോ ദിനത്തിലെ പ്രസന്റേഷനുകൾ. കാരണം ഞങ്ങൾ കുറെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, പൊതുജന നന്മയ്ക്കായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡിയാർ സാർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു കേരളീയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാറ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാറില്ല. സാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ നന്മ, അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമാണ്. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി തുറന്ന് പറയും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് yes or no എന്ന് തോന്നണമെന്നില്ല, അവര് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സാറിന്റെ ചിന്തകള് വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ്. അത് മാനവരാശിക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഗുണകരമാക്കാം, അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യവും. സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. പക്ഷെ സാറിന് അവിടെയൊന്നും ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല. സാറ് അങ്ങനെ US പോയി അവിടെ അതിനുശേഷം MDക്ക് ശേഷം MRCPയും അതുപോലെ തന്നെ ABIUയും USA നിന്നൊക്കെ എടുത്തു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബിഹേവിയർ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് USA വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ അതിലുപരി അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പരീക്ഷണ ദ്രാവകത്തെ വാക്സിൻ എന്ന പേരിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അത് ഒരു വിധത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല, അതിൽ ദോഷമാണ് കൂടുതലെന്ന് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ വേദിയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പിൽ നിർത്താവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് സാറ്. സാറും വാക്സിൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും സാറിന്റെ യൗവനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. അത് എല്ലാവരും നമ്മളെ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം. അതായത് എന്താണ് കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കോമൺ സെൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായും നമ്മൾ എല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ വന്നെത്തുകയാണ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി സാറിനെ. സ്വാഗതം സാർ. എല്ലാവരും കാണാമല്ലോ? കാണാം. ഓക്കെ, ഗുഡ്. കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ വെബിനാർസ് എല്ലാം ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മോണോലോഗ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മൾട്ടിലോഗ്. ഡയലോഗും അല്ല. ഞാൻ ചിലപ്പം ഇദ്ദേഹം ഡിസിൽവിയെ വിളിച്ചെന്നിരിക്കും, അടുത്തത് സനൽകുമാറിനായിരിക്കും, പലരെയും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയലി യൂസ്ഫുൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് ഞാൻ അറിയണം. സോ വാട്ട് യു നോ, വാട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ, സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മോഡിഫൈ മൈ പ്രസന്റേഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനും എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം ആ ഓഡിയൻസിന് പറ്റിയതായിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കും മറയ്ക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സാധാരണ മിക്കവരും ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒളി. ഇത്തവണ ഞാനിപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ, യുവർ റെസ്പോൺസ് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് ഓർ നോ. അതിന് യെസ്സിന് വൈ, നോക്ക് എൻ, എഗ്രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ, ഡിസഗ്രി ഡി. അടുത്ത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സനൽകുമാർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേറെ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഞാൻ അവരുടെ ഇതിൽ കാണുന്ന പേര് ഒരു ഡോക്ടർ ഷീല എന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശശികുമാർ, ഡോക്ടർ എസ് ബാസി, അവര് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, യെസ്, നോ, എഗ്രി, ഡിസഗ്രി. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ടോക്ക് മിക്കവാറും ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ട്രാക്ക് മാറിപ്പോകും. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, കോമൺ സെൻസ്. ഞാനിന്ന് രാവിലെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു, കുറെ എനിക്ക് നമ്പറുകളുണ്ട്, നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു 100 പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 100 പേര്, അതിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്കാണ് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടെ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. പെർസെൻറ്റേജ് 10% ആണോ, 50% ആണോ, 100% ആണോ? ഒരു പെർസെന്റ് ഇട്ടെ, ഒരു നമ്പർ വരട്ടെ. 45%. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ ശശികുമാർ, അദ്ദേഹം ഒരു പെർസെന്റ് ഇട്ടെ, നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. എളുപ്പം, ഒരു പെർസെന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു നമ്പർ ഇട്ടെ, പെട്ടെന്ന് ഇട്ടെ, സമയം നമുക്ക്. ഇനി ഇദ്ദേഹം ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലൂ ഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പേര് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒന്നിട്ട് എത്ര പെർസെന്റ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലൂ ഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാള്. ഷെടാ, ഇതെന്ത് പറ്റി? സാറേ, അത് ചിലപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഹിന്ദി സെഷനിലെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുവേ, ചിലപ്പോ മലയാളം. എന്നാൽ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ KG, ആ പേരെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല തനി മറ്റേ മലയാളിയുടെ എല്ലാം മണമെല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മണക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നമ്പർ ഇട്ടെ, എത്ര പെർസെന്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ചേടാ, ഓക്കെ. ശശികുമാർജി 50. ഓക്കെ. ഇനി ഒന്നും കൂടെ വന്നാൽ മതി. വേണോ 40%. അപ്പോൾ തന്നെ 100% ഇല്ല. ലിറ്ററസി ഏറ്റവും സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഈ 50%, 60% പേർക്ക് എവിടെ പോയി? നമുക്കിപ്പോ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അനീമിയ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ടോക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയും. അത് നേരത്തെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അജണ്ട ഇല്ല. അതിന്റെ ഫാക്ട്സിനെ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഇത്. എനിക്കിപ്പം I am 71 years old. I have been like this all along. Okay. Now let me show the second slide. ഈ ടോപ്പിക് ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്. തോമസ് പെയിന്റെ കോമൺ സെൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, ദി ഡെത്ത് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിൽ തോമസ് പെയിൻ, ഹി വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഫിലോസഫർ. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 214 കൊല്ലമായി. ഹി ഡൈഡ് സംവെയർ അറൌണ്ട് 1809. അപ്പോൾ പുള്ളി അന്ന് തന്നെ കോമൺ സെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് സംഗതി. സോ ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഹൈലി റെലവെന്റ്. ഇത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഈ ടോപ്പിക് വിൽ ബി ഒരു ഇറലവന്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് സനൽകുമാർ A. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ്. എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് വൺ ആക്ച്വലി മേക്സ് മീ മോർ enthusiastic. ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർക്കും കുറച്ച് enthusiasm വരണ്ടേ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി സനൽകുമാർ എല്ലാം. Purpose of this talk,
നോ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ സെൻസ്. കോമൺ സെൻസ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ പറ്റില്ല. എന്താണ് കോമൺ സെൻസ്? നോ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് ആൻ അൺകോമൺ സെൻസ്. അതും അറിയണ്ടേ? പേര് തന്നെ ഒരു മിസ്നോമറാണ്. പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കോമൺ സെൻസ്, പക്ഷേ അത് അൺകോമൺ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ചിലരുടെ പേരിലല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുടി വളരെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചാലും സുകേശിനി അല്ലേ, പേര് സുകേശിനി. അല്ലെങ്കിൽ സുലോചനൻ, അങ്ങ് കോങ്കണ്ണാണ്, ആള് കോങ്കണ്ണാണ്, പക്ഷേ സുലോചനൻ അതുപോലെയാണ് കോമൺ സെൻസ്. ഏതായാലും ഡിസിൽവയ്ക്ക് ആരോഗ്യം കൂടും, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിരി എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കുറെ ഹോർമോൺസ് ഡോപ്പമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, സീറോട്ടോണിൻ, എൻഡോർഫിൻ എല്ലാം കൂടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. കോമൺ സെൻസ് ഇസ് അൺകോമൺ. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോ ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മിക്കവർക്കും അറിയാം, അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, അനീമിയ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറിയാമല്ലോ. ഇമ്പാക്ട്, ക്ഷീണം അല്ലെ, ഫീലിംഗ് ടയർഡ്നെസ്, പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ ഈ കോമൺ സെൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇമ്പാക്ട്, യെസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ് വൺ. അവസാനം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ ഈ ഇല്ലാത്ത 50% പേർക്ക് ഇല്ല, അല്ലെ ഉള്ളവർക്കും അത്ര പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, അതൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? സോഫാർ ഇത്രയും നേരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടോപ്പിക്ക്? ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫാർ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് സെഷൻ സോഫാർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, യെസ്, സനൽകുമാർ വൈ, റസീന മുഹമ്മദ് വൈ, ഗുഡ്, ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിൽ ചോദിച്ച് പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം ചെയ്ത ഉഗ്രനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെന്ന് ഒരു ടോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ വടി പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കോമൺ സെൻസ് is this one, Thomas Paine, he said that common sense, ഈ ബുക്ക്, there are plenty of books, ഇങ്ങനെയും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവ പതുക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു കോട്ടുവായിടും,